Was talking to Suraj Palamu. He's the Haryana Olympics vice president. Now, he seemed to suggest that he was aware of what was happening. He did try to raise it with the WFI, but there was no response from them. I'm going to go back on the ground to Suesha right now. Suesha, we are, of course, awaiting to hear from the wrestlers who were on a silent protest for a while. But any reactions that you are getting to these rapid developments that are taking place at the Sports Ministry level, also, to these various voices that we are now hearing about the rot that was there for a while now? Okay, Nipur, I'm sorry, you may have to repeat the question because I'm not able to hear you very clearly. But really to just give you a sense of what's happening here, I must say that the protest and its strength is expanding. The number of wrestlers, the number of supporters here are only getting larger by every passing minute. And we see how the country is now asking questions on their behalf. Because like I said, Nupur, this is a shame on the entire system to the very fact that these are the wrestlers, these are our sporting talents who are now having to sit on the streets of Jantar, Mantar, who are sitting on the grass here, and they are fighting for something as basic as this. They say that they have had a threat to their life. Remember, they are the ones who have always made us proud. They are the ones who have always brought laurels to the country. And these are the budding youth, the budding sporting talents of our country who are now sitting here, who say that their fight is against the federation. They are now here to raise their voices against the federation because they have been pressed for way too long, for way too many years. And it is the man on the top who has and is responsible for the rot in the system. Brij Bhushan Sharan is the man in that chair who, remember, tried to pin the blame on the wrestlers, who called it a conspiracy, who said that they were inadequate, and which is why they are bringing this forth. But actually, the wrestlers say that, they have been going through this for years together. And there is a clear problem in the way the federation has been functioning all these years, in the way they have been pressed upon, these rules have been imposed upon them, and the very fact that they are not given their due, and which is why they demand that Brij Bhushan Sharan must be sacked. Now, there needs to be a systemic change. This needs to be set as an example for the very fact that these female wrestlers also, they say that several coaches have also indulged in asking for sexual favors, in sexual harassment, in how they have been functioning like this, and this is what the nexus is all about. And it is really the man on the top who is responsible for what is happening. I understand, Nupur, we have a lot of people here, and slowly, you may not be able to see me clearly because a lot of them are here. But in a short while from now, Bajrang Punia has just come, he's here, and he will be speaking very, very shortly. He's right here. You see, Bajrang Punia is walking inside, and he will now be speaking. He's here, he'll be speaking shortly. All right, so we are awaiting Bajrang Punia to talk to the media right now. Do remember that there was a silent protest that was on for about an hour and a half. Now, there are several peace-making moves that have been made, at least by the government at this point in time. We are hearing of a committee that's been formed. It will have 2 female members. The wrestlers whose number seems to have grown today haven't responded yet to the suggestions that have been made by the ministry. We are also told that the ministry has asked the president to respond in the next 72 hours. Now, that, of course, was given out yesterday. So, obviously, there's a little less time now for him to react. But so far, we haven't really seen the buckling down of the man at the center of this controversy. We spoke to him a short while ago. He seemed to continue to maintain that there was nothing wrong with the way in which the federation was run. He also seemed to continue to back his claims that this was about older wrestlers going up against younger wrestlers and not getting a chance. So that's his point, what he is saying. But on the ground, the number of young wrestlers who are there joining their senior colleagues, tells quite another story. Suesha, if you can hear me.
I don't think Suesha can quite hear me, but we're going to try and go across to her in just a bit. If you can hear me, Suesha. Nupur, I can hear you. I'm sorry, it is slightly chaotic here because like I said that the fight is really expanding and Bajrang Punia is expected to speak very, very shortly. In fact, he has the mic in his hands. And like I said, because huge media contingent here, a lot of wrestlers here, very shortly, within literally under a minute, you'd be able to hear him. Now, he's just requesting for silence so that he can really start speaking. But Nupur, in the meanwhile, as he's starting, I just want to tell you that you see the strength here. You see how this protest is now getting bigger. It is on day 2. Please, let's listen into him. और मेरे साथ 97% है। आज मुझे लगता है कि कोठी पे ताला लगा हुआ और जो बयान दिया था 3% खिलाड़ी बैठे हैं और मेरे साथ 97% है। आज मुझे लगता है कि कोठी पे ताला लगा हुआ है वो है। हमने अपनी आवाज हल्की आवाज वाले नियत सबको अपनी चाहते हैं क्योंकि ये हमारे भाई नीचे बैठ के जाना दोस्त है ना जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का उसके लिए हम नहीं सहेंगे इसलिए हमने आवाज उठाई है और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि शांति बनाए रखिए क्योंकि जो कानून की जो व्यवस्था है उसको भी बना के रखना हमें कोई उसका उल्लंघन ना करे और सर प्लीज कैप आप लोग है ना हमेशा साथ खड़े हैं के खिलाड़ियों के क्या करूं कैसे हमारा सहयोग कर रहे हैं धन्यवाद कोऑपरेट कीजिए ना प्लीज आप बताओ तो सही क्या करूं मैं सर आपका कैप आ रहा था ऊपर मैं आपको एक चीज और बोलूंगा इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए हम खिलाड़ी हैं हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं माइक को इधर फेंक दे दूंगे नमस्कार लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ जो हमने लड़ाई लड़ी है जो कुश्ती की भलाई के लिए निकल के आई हैं और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से बोलते आ रहे हैं तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए डरने की किसी से जरूरत नहीं है हम अपनी मेहनत से आए हैं अपने परिवार की मेहनत से आए हैं ये देश हमें प्यार दे रहा है इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है हम सब साथ में हैं सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बढ़ाना है जो हमें राह दिखाई गई है हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं पहलवान आए हैं तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे और लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबका जब तक एक व्यवस्था होगी प्लीज देखें महिलाएं बहन आई हुई हमारी आप नीचे बैठ जाए सहयोग के लिए आए आपका बड़ा आदर है मान है सम्मान है भाई एक ना भाई सुनो एक बार ना बहन जी रुकिएगा एक बार जितना हमारे मीडिया कर्मी है एक बार ध्यान से सुन ले देखो चहल पहल ज्यादा होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बजरंग पहलवान जी भी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुन लो पहले जो भी होगी व्यवस्था आप सभी है ना एक एक व्यक्ति जो भी होगा
बिल्कुल यूं का यूं बैक साइड में, यहीं पे। लेकिन सुनो, यहीं पे रखेंगे, लेकिन शांत होकर के एक व्यक्ति एक ही समय पर प्रश्न दे, माइक पकड़ करके जिससे भी आप पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। आके बिठा दो, आगे आ जाओ। दादा थोड़ा लेफ्ट में आएंगे आप, थोड़ा सा लेफ्ट में। हाँ बस ठीक है, आगे भी लोग हैं, दिक्कत हो। सुनिएगा भाई साहब, ये प्रवीण जी या गौतम जी कहाँ हैं, हमारी कमेटी के मेंबर? एक बार ना वो ले आए। एक बार ना वो जो दूसरा माइक है ना वो उपस्थित करवा दे, जिनका प्रश्न होगा उनको दे देंगे और जो प्रश्न पूछ लेंगे यहीं से उत्तर मिल जाएगा। ये सही है ना? वायरलेस जो माइक है ना उसकी व्यवस्था हम देंगे भाई, वायरलेस माइक की व्यवस्था करो प्रवीण जी, जब तक है ना। All right, viewers, we continue our live coverage right now. We are live from Jantar, Mantar in New Delhi. We also have our reporters as well on spot. मैडम एक बार, मैडम प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार रिक्वेस्ट है प्लीज। क्या ये लोग तमाशा कर रहे हैं? Right, so basically what is happening here is that we will hear from Bajrang Punia very, very shortly. But obviously, like I said, that the protest is now really gaining strength, and a lot of people, not just wrestlers, but even supporters gathering here. अभी बोलना स्टार्ट करूँ, आप चुप हो जाओ। बोलो बोलो। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ ना, हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीज़ें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज़ पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा। और अभी एक बार 2 मिनट का मैं समय, 5 मिनट का समय दे दो, हम आपस में मध्यस्थता करके आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देंगे। अभी ठीक है, 2 मिनट का समय चाहिए हमें। यहीं से आप कर लेना, जी बिल्कुल यहीं से देंगे, 2 मिनट का समय चाहिए हमें।